A very good morning to all of you. Today we will discuss about the next one topic of chapter number 11. The topic is there which is the changes in quantity supplied or the supply, or which is also we can call the movement along a supply curve and shift in a supply curve. It means कि अगर supply के determinant में आने वाले चेंजेस की वजह से जो भी चेंजेस सप्लाई कर्व में आएंगे इट कैन इफेक्ट टू द सप्लाई कर्व इन टू टर्म्स either in the form of the movement or the shifting. So we know very well there is a positive relationship between the own prices of the commodity and the supply of that commodity, other things being constant. So simply हम क्या कहेंगे कि अगर किसी प्रोडक्ट के सिर्फ प्राइसेस में चेंजेस आते हैं एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, देन देयर विल बी द मूवमेंट along a supply curve. But on the opposite side, if the changes will come in the rest of the determinant of the supply and the own price of the commodity is constant, then it will related to the shifting of the supply curve, either the forward shifted or the backward shifted. So simply the movement and shifting. Movement जो होते हैं वो किस वजह से आते हैं? Due to the change in the own price of a commodity. But on the opposite side, if there is a shifting, it just occur due to the change in the factors other than the own price of the commodity. So movement can come in the form of extension or contraction of supply. On the opposite side, the shifting can come in the form of increase or decrease in supply. So extension and contraction on supply, कि जब किसी प्रोडक्ट के खुद के प्राइसेस में अगर चेंजेस आते हैं, so simply there will be the change in the quantity supplied of that commodity. It is related to the extension or the contraction, or we can also call it the movement along the supply curve or change in quantity supplied. So it can come in two forms: extension of supply and contraction of supply. तो extension में mainly क्या आ जाता है, other things being equal, कि जब एक commodity की quantity supplied जो है वो उसमें आने वाले prices में increase होने की वजह से increase हो जाती है, तो the simple thing we can tell here कि अगर like the tabular presentation, if the prices were 1, quantity supplied was also 1, अगर prices 5 हो गए, quantity supplied भी 5 हो गई, तो reason क्या था? Rise in the own price of the commodity. It lead to the extension of the supply. It can also representing through the help of the diagram extension of supply. X-axis, Y-axis. Prices were 1, supply was also 1. Prices अगर increase हो गए 5 हो गए, supply भी increase होके 5 हो गई. This is the supply now. So this is termed as extension. ये क्या हुआ? Extension हो गई, increase हो गया. कैसे? सिर्फ और सिर्फ prices में आने वाले changes की वजह से supply 1 से बढ़ के 5 हो गई. This is known as the extension of the supply. On the opposite side, contraction of supply, other things being equal, कि जो contraction है आपके product की quantity supplied जो है वो कम हो रही है, due to which reason? Due to the fall in the own price of the commodity. If the prices were 5, quantity supplied was 5, अगर prices कम होके 1 हो गए तो quantity supplied भी 1 हो गई. What was the reason? Due to the decrease in the price of the commodity, the supply is also reduced. Simple here, the same diagram, but the one of the point to be noted here, that thus in the similar diagram the point of extension and contraction is different. On x-axis, on y-axis, the prices were 5, quantity supplied was also 5. If the prices are 1, quantity supplied is also 1. This was the supply curve. तो पहले point क्या था? This was, we can say, the point at 5 rupees. Now it just reduced from 5 to 1.
This is known as the contraction of supply. Second one is the increase and decrease in supply. Increase and decrease in supply, simply we can say कि जैसे प्रोडक्ट के खुद के प्राइसेस में अगर चेंजेस आएंगे तो वो मूवमेंट की फॉर्म में आएगा. अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि प्रोडक्ट के प्राइस तो सपोज कांस्टेंट है, बट उसके रेस्ट वन डिटर्मिनेंट में अगर चेंजेस आते हैं, विच वी हैव स्टडीड ऑलरेडी, जैसे कि एक्सपेक्टेशंस में चेंजेस, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, फर्म का गोल हो गया, नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज हो गई, it will lead to the changes in the supply curve, and it will lead to the simply forward and the backward shift in the supply curve. So it just come in the two forms, increase in supply and decrease in supply. So increase in supply is mainly refers to a situation कि जहां पर ज्यादा सप्लाई की जाती है इवन एग्जिस्टिंग प्राइस पे. आपके प्राइसेस जो है वो कांस्टेंट है, 10 के 10 ही है, बट क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो गई. दिस इज नोन एज द फॉरवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, इंक्रीज इन द सप्लाई कर्व. Like we can also represent this situation with the help of a diagram. The prices are similar, prices are constant, no changes are there. This is same. Supply curve was this. Now supply curve forwardly goes. This is S2. This is known as the increase in supply. On the opposite side, what is the main reason? Increase कैसे हो सकता है? जो हमने determinant study किए थे, ड्यू टू दैट रीजन कि अगर हमारी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो गया, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस कम हो गए, किसी रिलेटेड गुड्स के प्राइस में कमी आ गई, नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज हो गई, मार्केट के अंदर फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है कि नियर बाय जो प्राइसेस है वो कम हो जाएंगे, तो प्रोड्यूसर प्रेजेंटली ज्यादा सेल करने लग गए. गोल जो था फर्म का वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से सेल मैक्सिमाइजेशन पे आ गया. जैसे हमने देखा है कई बार कि एट द एंड ऑफ द सीजन सेल लग जाती है 20% लेस, 40% लेस. समर जाने वाली है तो समर के प्रोडक्ट पे सेल लग जाएगी, विंटर जाने वाली है विंटर के प्रोडक्ट पे सेल लग जाएगी. दैट इज कि अगर प्रोडक्ट के खुद के प्राइस भी सेम है, उसके बावजूद सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है, टैक्सेशंस कम लग गए या सब्सिडी मिल गई, इट विल ऑल्सो लीड टू द इंक्रीज इन द सप्लाई. So second one is the decrease in supply. This is the opposite situation कि prices तो constant है, but supply जो है वो back forward shift हुई. Prices are 10 and 10, quantity supplied is 32, 20. The similar thing is there. This one the main supply curve, second supply curve is there. X-axis and Y-axis. Prices are constant, but supply curve पहले ये थी, अब वो back forward चली गई. This is known as the decrease in supply curve. It can also, this kind of situation can also arise due to some of the changes in the factors, which is that कि suppose आप outdated technology use कर रहे थे, तो आपकी efficiency कम हो गई, आपके cost of production जो है factors of production है उनके prices बढ़ गए, किसी कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ गए, एज वेल एज मार्केट में हो सकता है नंबर ऑफ फर्म्स कम हो गई हैं इंडस्ट्री के अंदर, जिसकी वजह से ओवरऑल सप्लाई में फर्क आया. फ्यूचर में प्रोड्यूसर्स को लग रहा है कि प्राइसेस राइज हो जाएंगे, उन्होंने करंटली सप्लाई को रोक दिया गया. फर्म का जो गोल है सेल्स मैक्सिमाइजेशन से वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ चला गया. फर्म जो है वो ज़्यादा फोकस प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए कर रही है, या टैक्स बढ़ गए, गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज कर दिए, या कोई सब्सिडी थी उसे हटा दिया गया. द सिंपल थिंग इज देयर, इन दिस सिचुएशन द सप्लाई कैन बी रिड्यूस्ड, इवन द प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी आर एट द सेम लेवल, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया, बट द प्राइसेस गोज रिड्यूस. So this was the situation of the movement and the shifting in a supply curve. Movement किस वजह से होते हैं?
अगर प्रोडक्ट के खुद के प्राइजेस में कोई चेंजेस आ गया, और शिफ्टिंग किस वजह से होती है कि फॉर्म प्रोडक्ट के खुद के प्राइसेस तो कांस्टेंट है, बट द रेस्ट वन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर changing, and the change can come in any of the form: extension of supply, contraction of supply, increase in supply, or the decrease in supply.